Mrs. Rama Ranjankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department from Praveen Patel College of Diploma Engineering and Technology, Bahindra. Today I am going to explain practical number 15 of embedded system, interface stepper motor with microcontroller. Now, practical significance states that different field applications require precise positioning, repeatability of movement in clockwise and anti-clockwise direction with the good accuracy. So, stepper motors are controlled by microcontroller in such areas like computer peripherals, business machines, making robots, and process control application. So, these practical help the students to develop the skills to interface the motor to 89051 and rotate in clockwise and anti-clockwise direction. These are the program outcomes. Now this slide shows the theory about stepper motor. So stepper motor converts the electrical energy into precise mechanical position. So these motors rotate specific incremental distance per each step. So the number of steps executed controls the degree of rotation of motor shaft. Okay, so this table shows the stepper motor step angles. So step angles are given and accordingly steps per revolution also mentioned here. Now the stepping modes, stepper motor operates in 4 stepping mode. One is a wave drive, that is a single phase, एक ही phase on रहेगा. अगर full step drive है तो 2 phases on रहेंगे. हाफ स्टेप है तो 1 and 2 दोनों फेजेस ऑन रहेंगे एंड माइक्रो स्टेपिंग. सो यहाँ पे एक टेबल दिया है दैट शोज द फुल स्टेप सीक्वेंस. सो फुल स्टेप सीक्वेंस में 2 स्टेजेस ऑन है पेजेस. सो देखो हेक्स कोड 1001 2 स्टेजेस ऑन है तो कोड जनरेटेड 09. सो इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज तो 1 ये आपका जो है ये यहाँ पे रोटेट हो गया है. सो इट बिकम C0C. So in this way clockwise sequence is generated and counterclockwise sequence is also generated. Now this is a practical diagram. In this stepper motor is interfaced with 89051 microcontroller with the driver IC. Now this is your practical setup. So ये 89051 माइक्रोकंट्रोलर है, ये स्टेपर मोटर है. तो स्टेपर मोटर वाया केबल हम लोग 89051 माइक्रोकंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे प्लस स्टेपर मोटर को अलग से. सो यहाँ पे 2 पावर सप्लाई है. एक पावर सप्लाई आपका किट का है, एक पावर सप्लाई आपको मोटर को देना पड़ेगा. देन एंड ओनली देन इट विल रोटेट. सो दिस इज अ सिमुलेशन डायग्राम. कोडिंग है. कोडिंग में देखो आपका ये जो है सीक्वेंस जो है 3366 CC99. इट मीन्स द मोटर इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन नेक्स्ट पार्ट आई विल शो हाउ इट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. So thus we studied the stepper motor interfacing with 89051 microcontroller. Thank you.